Everyone, welcome back to ACCA classes. Today we'll be studying the fifth chapter, and the chapter name is Stakeholders and Business Organization. Without wasting any time, let's get started. Now, काफ़ी easy chapter है, काफ़ी छोटा chapter है. इसको मैं जल्दी से complete करने की कोशिश करूँगा because इसमें ज़्यादा it is not difficult, ठीक है? But it is kind of important. Okay. Stakeholders मतलब what do you mean by stakeholders? एक stakeholders it can be an individual or an organization जो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, या जो आपके बिजनेस को नो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स. अंडरस्टूड? स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन ये है, ठीक है. बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं. Now, a stakeholder is an individual or group who has interest in what the organization does or who affects or can be affected by the organization action. ठीक है, समझ गए? Now, what are the types of stakeholders? मैं ऐसे नहीं करूँगा. What I'll do is I'll just बस हाँ, तो शायद यहाँ पे ही हो जाना चाहिए सब कुछ. So first of all, what are the types of stakeholders, right? Types of stakeholders में आप पहले इसको दो करिए. First divided into two parts. One is एक होता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, एक होता है सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्टेक होल्डर्स? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर दोज टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स हु हैव अ contractual basis with the business organization. So what is the keyword over here? Contractual base. Contractual base or contractual link. You can use any of the two words, but I'll use contractual basis. Okay. What is secondary type of stakeholders? Secondary type of stakeholders are those kind of stakeholders which do not have a contractual basis with the business organization. There's nothing called as contract when it comes to these type of stakeholders, right? So no contractual basis. Simple. Now, primary stakeholders क्या क्या हो सकते हैं? Primary stakeholders can again be divided into two parts. Internal, connected. Here, external. Understood? ठीक है. So first of all, let's hop on to the who are internal stakeholders. So yes, first of all, internal. Okay. So internal stakeholders होते कौन है? ऐसे ऐसे लोग जो दे दे आर इन्वॉल्व विद द ऑर्गेनाइजेशन itself. मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं, राइट? सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द कीवर्ड. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट हाँ, within the organization. Perfect. Within the organization होते एग्जाम्पल क्या हो गए? एम्प्लॉयज. ठीक है, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स. ओके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाई आर दी स्टेक होल्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनल के केस में एम्प्लॉयज का केस लेस. एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? बेसिक पे चाहिए, ठीक है, ठीक है, रिकग्निशन चाहिए, ठीक है, उनको प्रमोशंस चाहिए. ये सब बेसिक है. इसलिए अगर आप ये तीन फॉलो नहीं करोगे, अगर आप ये तीन फॉलो नहीं करते, एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो दे माइट लीव योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच विल अफेक्ट योर कंपनी, राइट? डायरेक्टर्स को क्या चाहिए? डायरेक्टर्स को बेसिकली बोनसेस चाहिए, ठीक है, ईसॉप्स चाहिए, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ओके, ईसॉप्स चाहिए. So these are the kind of things which directors expect. If you don't give these, directors will get offended. Simple. Internal हो गया. Second, connect. Second one is connected. Okay. So connected stakeholders का क्या मतलब होता है? ठीक है. Now connected stakeholders are those kind of stakeholders who either invest or have dealings with the firm. Okay. This is the definition. This is the actual definition which is given in your textbook as well. Invest or have dealings with the firm. Understood? So yeah, invest or have dealings with the firm, right? Now, who are these? So first of all, example, shareholders. शेयर होल्डर्स को हो क्या? आप एक रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो, बहुत सारे शेयर्स होल्ड करते हो, आपको क्या चाहिए?
आपको चाहिए कि जो कंपनी वो रेगुलरली डिविडेंड्स पे करे. नाउ दिस इज व्हाट दिस स्टेक होल्डर विल विल होप कि यार ये चीज मुझे मिले. सो व्हाट दे विल होप फॉर डिविडेंड्स. दे विल होप फॉर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाट कस्टमर्स को क्या है कि यार उनका जो, अगर सपोज नो सर रिलायंस का कैंपा खोला है, अगर वो जो 10 रुपए की है होती है, राइट, क्या वो 10 रुपए इज एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी. सो हियर द कस्टमर्स विल एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर मनी. दैट्स इट. ओके. व्हाट विल सेकंड इज सप्लायर्स. सप्लायर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके पैसे टाइम पे दीजिए. यू आर बेसिकली, अब आप कोई नो नो आप अपना डेट डिफॉल्ट नहीं करते. यू डू नॉट डिफॉल्ट योर पेमेंट्स. डू नॉट डिफॉल्ट योर पेमेंट्स. ओके. सप्लाई से एक्सपेक्ट करते हैं. फाइनेंस, अगर आपने लोन करके आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंस विच इज फाइनेंस प्रोवाइडर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सपोज आप उनसे लोन लिए तो आप अपना मंथली ईएमआई टाइम से भरो. ठीक है, जो मंथली आपके इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, वॉट एवर योर मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर, यू पे दैट ऑन टाइम. ठीक है, सो यू डोंट मिस एनी पेमेंट. ओके. सो इंटरनल हो गया. कनेक्टेड हो, कनेक्टेड मतलब इन्वेस्टर हैव डीलिंग्स विद द फर्म. एग्जांपल कस्टमर, सप्लायर, और क्या फाइनेंस प्रोवाइडर्स एंड शेयर होल्डर्स. दैट्स इट. ठीक है. थर्ड वन इज एक्सटर्नल. ठीक है. External, no, external. So first I'll write the examples. Okay. So one is community. Okay. Environmental pressure groups. Okay. You have government and you have trade unions. Okay. So external. भाई राम, एक्सटर्नल को एवर्टर्नल लिखा हूँ मैं. एक्सटर्नल. सॉरी गाइस. है राम, एक्स क्या दिख रहा है, नेवर नेवर माइंड. तो एक्सटर्नल क्या होता है. सो एक्सटर्नल के आपके एग्जांपल्स क्या हो गए. कम्युनिटी, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट. अंडरस्टूड. ओके, याद आ रहा है. एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, कम्युनिटी. ठीक है, ये चार. ठीक है. अब सपोज आप एक बिजनेस, आपकी एक फैक्ट्री. ठीक है, आपकी एक, यू हैव अ फैक्ट्री एंड अ सर्टेन काइंड ऑफ एक पोल्यूशन इमिट होता है वो फैक्ट्री से. तो जो भी बाजू वाले रहने वाले हैं, जो भी बाजू के रेजिडेंट्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी. उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे. तो क्या आपका कम्युनिटी इफेक्ट हो रहा है. सो द कम्युनिटी अराउंड यू इज गेटिंग अफेक्टेड. सो जब कम्युनिटी इफेक्ट हो रहा है तो आपके एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स आएंगे. बस व्हाट आर यू डूइंग. Follow certain kind of practices which will not actually harm the people around the factory and not even the environment, right. Best example factory का है. So government, what will government expect, that you don't do, you don't manipulate your financial statements, and you don't practice any kind of things like tax evasion. No tax evasion. Okay. Trade unions. Now this is relatable to which, to the internal. Suppose you're not keeping your employees happy, you're not giving the fair wages, right. Now what will happen. A trade union will be formed and they'll protest against you, which is again a very bad signal for the company. Understood. 90% of the chapter is done. Now there is something called as stakeholder conflict, right. What do you mean by stakeholder conflict. There are certain types of conflicts which can happen between internal connected and external stakeholders. Example, company versus environmental pressure groups. Okay, manager versus employees. Okay, company versus government. So these are kind of stakeholder conflicts, right. Now how do you overcome these stakeholder conflicts. There is something called as Menlo's. I'm just seeing the spelling whether if I'm writing right or wrong. So Menlo's power interest matrix. Now this basically tells us, okay. So this basically tells us, now what does it actually indicate? It indicates two things. Now this thing indicates two things. One is your power. How much power do you hold? How much, the ability
to basically influence decisions. Okay, so ability to influence decisions. Second one is interest. Now, how much they actually care about the how much, sorry, English bully, how much they care about the project, right? Okay, सो ओके, हमको मालूम है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स व्हिच एक्चुअली टेल्स अस टू थिंग्स. वन इज पावर, सेकंड वन इज इंटरेस्ट. पावर मतलब क्या? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस. इंटरेस्ट मतलब क्या? हाउ मच दे एक्चुअली केयर अबाउट द प्रोजेक्ट. फर्स्ट I will draw the diagram of it, right? So you'll have over here level of power. Okay, here you have level of interest. You can directly copy it from the textbook as well, right? So you'll have low, high. Okay, you'll have here low and high. Okay, you'll, so just copy this and then I'll make you understand. Minimal effort, keep satisfied. ठीक है, keep informed. Okay, and second one is key players. Okay, first copy this whole layout, right? Copy. Okay, so नाउ सबसे आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. सपोज आप एक कॉलेज में, आप सपोज एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आप सपोज इमेजिन यू आर स्टडिंग एट अ कॉलेज एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल फेस्ट. ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट. ओके, नाउ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे अगर आप फेस्ट इन्वॉल्व कर रहे हो. सो फर्स्ट वन मैं एग्जांपल लूंगा लोकल शॉपकीपर्स. लोकल शॉपकीपर्स मतलब कि आपके कॉलेज के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे दुकान रहेंगे. नाउ टेल मी वन थिंग. ठीक है, take a very, what you call, don't take a biased view, take a very general view. Okay, they don't have the power to affect the fest. Don't have power, don't have power to what? Affect the fest. And to be honest, they don't really care about it. No care. ओके, लोकल शॉपकीपर्स का यही है भाई. लोकल छोटी दुकान है, उसको क्या मतलब है कि कॉलेज में क्या फेस्ट हो रहा है, कि कब हो रहा है, किधर हो रहा है. एंड दे डोंट हैव पावर, उनके पास कोई पावर भी नहीं. तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? आप लगाओगे कि मिनिमल एफर्ट है. भाई ठीक है, ध्यान रखो बट उतना भी ध्यान मत रखो, उतना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है. राइट, मिनिमल एफर्ट इज अ थिंग. अंडरस्टूड. सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स. ठीक है भाई, अरे फेस्ट क्या, स्टूडेंट्स ही आएंगे ना फेस्ट में. अब फिर भाई बहुत वेरी हाई इंटरेस्ट. ठीक है, बट दे हैव लो पावर टू मेक डिसीजन. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हु एक्चुअली ऑर्गेनाइजेस द फेस्ट. द नॉर्मल स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गोइंग टू टेक पार्ट, यू नो, who are just going to attend that fest, right? Now they have very low power for decision making. Okay, so what you'll do, just keep them informed. Understood? Keep informed. Okay, so this one, keep informed, right? Now say third one, you can take the exam as management. Okay, what is, so management has very high power. Okay, but they honestly, they don't, you know, care about every detail. They don't care about every detail. So what you'll do, just keep them satisfied, keep informing them, keep, you know, keep giving them regular updates. Do not make them unhappy. So you will do as, so the answer over here will be keep satisfied. Okay, last one, the dean and organizing committee, OC, I'm giving the short form. Now what will happen? Definitely they'll have high power.
and they will definitely have a very high interest, because if they're going to do a very good fest, कॉलेज का नाम बढ़ता है, सब होता है, सो उनके पास हाई पावर भी रहेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, और हाई इंटरेस्ट भी रहेगा. सो हु आर दे? सो दे आर दी की प्लेयर्स. बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, समझ गए? ये आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, understood? So okay, so that's it, we are done with this chapter. There's nothing else to study ये चैप्टर में. बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मेनलोस पावर मेनलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक एक्चुअली देखा जाए तो. मतलब जब मैं ये एग्जांपल ऐसा सोच रहा था कि क्या लिखना चाहिए यहाँ पे ना, जब मैं लोकल शॉपकीपर्स का ले रहा था यहाँ पे, दे हैव सेड इट, आई हैव रिटन दैट दे डोंट हैव पावर टू अफेक्ट द फेस्ट, बट दे माइट बी, अगर सपोज कोई दूसरा वेंडर ला लेते हैं फेस्टिवल, दे माइट हैव अ प्रॉब्लम इफ दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. So I don't think if it's right or wrong, but at least this could be one of the alternatives which an college could do, right? So this is again a very subjective based. ठीक है, आपको बहुत एक जनरल व्यू लेना है. डोंट पुट आपका दिमाग इसमें ज्यादा. ठीक है, एक जनरल व्यू लेना है, बस ज्यादा नहीं सोचना है टॉपिक के बारे में. सो अगेन दैट्स इट. Thank you guys, please subscribe this channel, and I'll get you more lectures in the next video. Thank you.